बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास कंपलसरी इंग्लिश सेकंड जो है कंपलसरी इंग्लिश 2 1424 कोड की बुक है, बी एड वाली। उसकी ये एक असाइनमेंट है और जो सेमेस्टर है आपके पास वो ऑटम 2022 के लिए ये असाइनमेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 से लेकर जो 4 तक यूनिट्स हैं उनमें से ये असाइनमेंट है और टोटल मार्क्स इसके 100 हैं। आउट ऑफ 100 आपने 40 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं, तब आपने पास होना है बीए में से। और जो एडीएस या एडीए वाले हैं उन्होंने 50 मार्क्स लेने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी असाइनमेंट को। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। वो कहता है कि ये नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं ये यूनिट नंबर 1 से लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ए पार्ट और आगे नेक्स्ट इसका बी पार्ट आएगा। ये यूनिट नंबर 1 से लिए गए हैं। इनको इस यूनिट को आप केयरफुली पढ़ें और जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। वो कहता है कि पेजेस जो हैं वो 1 से लेकर 14 तक पेजेस पढ़ें। अब इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर नहीं होगा उन पेजेस में, इस के आंसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। वो टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, आपको वो मेथड सिखाया जाएगा इन पेजेस के दरमियान जो 1 से लेकर 14 तक पेजेस हैं। वो कह रहा है कि इनको अच्छी तरह पढ़ें और इस कंटेंट को जो एकेडमिक राइटिंग के रिलेटेड है और एसेस की मुख्तलिफ़ टाइप्स जो हैं वो उसमें बताई गई हैं। ठीक है जी। उसके बाद आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अपने अल्फाज के अंदर आंसर लिखें, ये नहीं कि कहीं से रट्टे लगा लें, या बल्कि उसको समझें। 1 से लेकर तो 14 तक जो पेजेस हैं उनको पढ़ें और उनको समझें और वो टेक्निक्स जो हैं वो सीखें जिनसे आप एसेज लिख सकते हैं इस किस्म के, और फिर अपने अल्फाज के अंदर लिखें जी। राइट एन एकेडमिक ऐसे ऑफ अबाउट 250 वर्ड्स ऑन इलिटरेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो नाखानदगी है, मींस पढ़ा लिखा ना होना, उस पर एक मजमून लिखें। अच्छा जी, मैं अब जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। वहाँ पे आपने इसको तसल्ली से पढ़ लेना है कि आपने इस किस्म का जो ऐसे है वो कैसे लिखना है। इलिटरेसी इन पाकिस्तान। Illiteracy is a major problem in Pakistan. Over one third of population of Pakistan's estimated population of 208 million is illiterate. ठीक है जी, 208 मिलियन लोग जो हैं वो तकरीबन नाखानदा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। With only an estimated 66% of population being literate. ठीक है जी। Illiteracy is a problem that affects every aspect of life in Pakistan, from its economy to its health and education systems. The causes of illiteracy. अब यहाँ पे causes आ गए। causes and effect वाला जो है वो ऐसे है। The causes of illiteracy in Pakistan are varied and include lack of access to education, cultural and religious norms that discourage educational opportunities for women, and poverty. There are also geographical and political factors that have hindered access to education and development of an effective educational system. ठीक है जी, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है हिंडर्ड। इसका मतलब होता है रोकना, मना करना, मज़ामत करना। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, जो कि एजुकेशन तक रसाई जो है वो रोकते हैं। इन एडिशन द सोसाइटी इन पाकिस्तान इज़ हाईली पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल का मतलब होता है कि ऐसा माशरा जिसके अंदर जो है वो सरदारी वाला निज़ाम होता है। मींस एक जो उसका सरदार होता है या गांव का जो पंच होता है वो उसका फ़ैसले वगैरह करता है। एंड मैनी गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट गिवन द सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है जी, तो लड़कियों को या ख़वातीन को इतने मौक़े नहीं मिलते जितने के मेल को मिलते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। द consequences ऑफ illiteracy आर far reaching and include high unemployment, poverty and health problems। ठीक है, तो
अनएजुकेशन जो है उससे ये भी प्रॉब्लम होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और हेल्थ के प्रॉब्लम्स। इलिटरेसी आल्सो हिंडर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल इकोनॉमिक inequality in the country. In addition, illiteracy has an impact on the quality of life of individuals as it limits their ability to participate in society, access information, and understand the working of the world. The government of Pakistan has taken steps to address the issue of illiteracy by launching the National Education Policy in 2018. This policy includes initiatives such as creating an education fund to support the education of children, increasing access to technology in schools, and providing the incentives to teachers and students to pursue education. ठीक है जी। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की उसने कुछ स्टेप्स लिए थे 2018 की पॉलिसी के मुताबिक, और उसने काफ़ी सारा मतलब ये काम किए, फ़ंड दिए, सपोर्ट की चिल्ड्रन को। ठीक है। इसके बाद स्कूल में टेक्नोलॉजी जो है उसको इंक्रीज़ किया और बच्चों को, टीचर्स को जो है वो इंसेंटिव्स दिए। द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू एड्रेस द इशू ऑफ इलिटरेसी हैव हैड सम सक्सेस, with the number of illiterate people in Pakistan declining by 1.5% between 2015 and 2020. However, more needs to be done to improve access to education for all Pakistanis and to ensure a quality education for all. In conclusion, ठीक है जी, ये भी आप सारा तरीक़ाकार जो है वो बुक में सीखते हैं कि आपने एंड पे कंक्लूजन भी देना होता है जो आपने ऐसे लिखना है। Illiteracy is a major problem in Pakistan that affects every aspect of society. The government has taken some steps to address the issue, but more needs to be done. Education is the key to unlocking the potential of all Pakistanis and must be a priority for the country if it is to achieve its potential. ठीक है जी, ये था एक पार्ट। इसके बाद बी पार्ट है, ये भी आपको 1 से लेकर 14 वाले पेजेस में से मिल जाएगा। डिफाइन कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे, हाउ इज़ इट डिफरेंट दैन अदर टाइप ऑफ एसेज, प्रोवाइड वन ब्रीफ एग्जांपल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे। ठीक है जी, तो ये वाला सेम आपको उधर से मिल जाएगा। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स पर ऐसे लिखें, बल्कि उसने कहा कि कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करें, उसकी एक मिसाल दें। A cause and effect essay is a type of essay in which the writer analyzes and explains the causes of particular event or issue and its consequences. ठीक है जी, it is different from other type of essays as it requires the writer to provide evidence and to explain how the various factors interact to produce the effects. ठीक है जी। इसके बाद बेशक ये वाली लाइन आप रहने दें नीचे वाली। इसके बाद फॉर एग्जांपल पे आएँ। A cause and effect essay could discuss the effects of global warming on the environment. अच्छा जी, अगर वो कहता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग वाला ऐसे लें, द राइटर वुड फर्स्ट एक्सप्लेन साइंटिफिक एविडेंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स लाइकली काजेज़ सच एज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी साइंटिफिक एविडेंस वो बताएगा, फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट रिलीज़ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर, फिर उसके वो काजेज़ बताएगा, वजह जो है वो वजह क्यों आई है उस प्रॉब्लम की। द राइटर वुड देन मूव ऑन टू डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फिर वो उसके इफ़ेक्ट्स बताएगा कि उसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या हैं, सच एज़ राइजिंग सी लेवल्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड इंक्रीज्ड ड्रॉट इन सर्टन एरियाज़। ये उसके ड्रॉबैक्स हैं, यानी उसकी जो खामियां हैं, उसके असरात हैं। The essay would then explain how these effects could lead to further social, political and economic issues such as food insecurity and displacement of populations. Finally, the essay would discuss potential solutions to the problem. इसके बाद आपने एंड पे उसकी suggestions भी देनी है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, such as reducing greenhouse gas emissions and implementing renewable energy sources. इन कंक्लूजन, इसके बाद आपने नतीजा निकालना होता है, कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। अ कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे इज़ अ टाइप ऑफ ऐसे दैट एग्जामिन्स द
causes and effects of of a particular event or issue. It requires, ये पीछे भी लाइन बार बार आ चुकी है. It requires the writer to provide evidence and explain how the various factors interact to produce the effects. This type of essay is often used to explore social, political, or economic issues. It is different from other types of essays as it requires the writer to provide evidence and to explain how various factors interact to produce the effects. ठीक हो गया जी. तो ये सेम ऊपर वाली ये वाली जो लाइन है ये आप लिख सकते हैं कंक्लूजन के अंदर, इससे कोई इशू नहीं होगा. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2. उसने कहा है कि ये भी क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 से ही है और 31 से 34 तक जो पेजेस हैं उनको आप पढ़ें. उनके अंदर जो कंटेंट है वो फार्मल और इनफार्मल स्टाइल जो है लिखने का उसके बारे में उसमें सिखाया गया है. और ये वाला पैराग्राफ जो है नीचे यहाँ पे दिया गया. इस पैराग्राफ को पढ़कर अच्छी तरह ये गैस करें कि ये फार्मल है या इनफार्मल है, और फिर उसको एक्सप्लेन करें कि ये फार्मल है तो क्यों है, अगर इनफार्मल है तो क्यों है. अच्छा जी, आंसर है हमारा कि इस पैराग्राफ के अंदर वो कह रहा है कि फार्मल राइटिंग स्टाइल जो है वो यूज़ हुआ है. इसकी कई वजूहत हो सकती हैं. पहली वजह वो ये लिखता है, इन दिस टेक्स्ट फार्मल वर्ड्स आर यूज्ड, नो इनफॉर्मल वर्ड इज़ प्रेजेंट. ठीक है, इसमें फार्मल वर्ड यूज़ हुए हैं, इनफॉर्मल वर्ड कोई भी यूज़ नहीं हुआ. फार्मल राइटिंग स्टाइल a limited range of emotions such as exclamations, points, ellipses, etc. No such word is used in the text. अच्छा जी, फार्मल लेटर जो होता है वो होता है मतलब बेतकल्लफाना लेटर. ठीक है जी, जिसके अंदर आप कोई इनफॉर्मल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जो कि आप अपने दोस्तों से या कज़न से या इस किस्म के जो लोग हैं अपने जैसे उनसे जो आप कर सकते हैं वो आप फार्मल में नहीं यूज़ कर सकते. Formal writing is not a personal writing style. The formal writer is disconnected from the topic and does not use the first person point of view. ठीक है, फर्स्ट पर्सन को वो यूज़ नहीं करता, आई वो यू. No contractions should be used in formal writing style to simplify words. ठीक है जी, यहाँ तक इसको कर लें. इसके बाद लिख लें, abbreviations must be spelled out in full when first used. ठीक है, यहाँ तक कर लें. इसके बाद longer sentences are likely to be more prevalent in formal writing. यहाँ तक इसको भी रखें. इसके बाद writing for professional purposes is likely to require the formal style. The given text is also passive voice used passive voice sentence. ठीक है, नीचे उसने एक मिसाल दी है, ये सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, तो उसने कहा है कि ये देखें इसमें पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है तो ये फार्मल राइटिंग है. ठीक है जी, तो ये हमारा दूसरा सवाल था. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है. उससे पहले उसने कहा है कि आप यूनिट 2 को पढ़ें. यूनिट 2 में इन क्वेश्चंस के बारे में जो है वो मालूमात दी गई है. वो कह रहा है कि पेज नंबर जो है 51 से 52 तक जो है उन पर लेसन है क्रोनोलॉजी ऑफ मुग़ल किंग्स, उसको पढ़ें. और फिर जो है बहादुर शाह ज़फ़र पर एक नरेटिव ऐसे लिखें. ठीक है जी, तो बहादुर शाह ज़फ़र, फर्स्ट ऑफ ऑल बहादुर शाह ज़फ़र वाज द लास्ट मुग़ल किंग ऑफ इंडिया. तो ये चीज़ें आपको वहाँ से क्रोनोलॉजी ऑफ मुग़ल किंग्स से मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर. अच्छा जी, लास्ट मुग़ल किंग इनिशियली ज़फ़र वाज सिलेक्टेड बाय द प्रीवियस मुग़ल एम्पीरियर अकबर शाह सेकंड and was known as मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र, ये उसका नाम था. Subsequently he was declared the king of India in 1837. At the time of coronation he was merely 57 years old. He was determined to uphold the traditions of the Mughal empire that was established by his great-grandfather Emperor Aurangzeb. Afterwards, Zafar tried to preserve the Mughal Empire by countering the British East India Company's attempts to bring the Indian subcontinent under its control. Unfortunately, his attempts failed, and in 1857 the British declared war against the Mughal Empire.
Moreover, Bahadur Shah Zafar was forced to flee his own palace and go into exile in Rangoon. ठीक है जी, exile कहते हैं कैद को, कोठरी को। बर्मा के अंदर जो है वो रंगून है, उसमें कैद कर दिया गया। During this time, he wrote many poems that were translated into English and other languages. Furthermore, in 1862, Bahadur Shah Zafar died in Rangoon अवे फ्राम हिज होमलैंड। ठीक है जी, रंगून के अंदर ही बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो फिर वफ़ात पा गए थे और उन्होंने उसमें बहुत सारी नज़में और गज़लें लिखी। हिज बॉडी वाज रिटर्न टू इंडिया एंड वाज बरीड इन द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। Afterwards, his sons were deported to Rangoon and his grandsons were sent to exile in different places. In addition, Bahadur Shah Zafar was known for his patronage of the arts, literature and culture. He was a gifted poet and writer and was known as a great patron of Urdu and Persian literature. Also, he was a great admirer of music and was an accomplished musician. He was an avid patron of ghazal gaiki and was an expert in playing the sitar. Additionally, Bahadur Shah Zafar was also a great painter and was an expert in Mughal style of painting. He was a great admirer of nature and painted many beautiful miniatures that depicted the beauty of nature finally. Bahadur Shah Zafar will always be remembered as the last Mughal emperor of India who tried his best to preserve the Mughal empire and its traditions. He will be remembered as a great poet, musician, painter and patron of the arts. अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा है कि पेज नंबर 56 से 57 तक जो है वो पढ़ें और उसमें आपको अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स इसके बारे में बताया गया। तो उसको पढ़कर जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ बैंक मैनेजर। ठीक है, तो जब आप उस सेक्शन को पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अ डे इन द लाइफ ऑफ नर्स आ जाए, मैनेजर आ जाए, बैंकर आ जाए, टीचर आ जाए, ठीक है, डॉक्टर आ जाए, तो सब पर आप ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, अ डे इन द लाइफ ऑफ मैनेजर। A day in the life of a bank manager starts with the early morning preparation. Initially, he or she arrives at the bank to check the reports of the previous day and to figure out if the bank is meeting the daily targets or not. Subsequently, she makes sure that all the employees have arrived and the bank is ready to open. After that, he or she checks the banking system's customer service and cash flow to ensure smooth operations. Next, he or she starts receiving the customers and deals with their queries. He has also helps the customers with their banking needs such as opening a new account, withdrawing or depositing money and making investments. Along with this, he or she also attends meetings with the senior management to discuss the strategies. अच्छा जी, afterwards he or she reviews customer requests and complaints and resolves them as soon as possible. In addition, he or she looks after the security of the bank and makes sure the safety measures are taken care of once the bank is closed. He or she checks the daily performance reports and makes sure that the bank has met its targets. Furthermore, he or she also checks the cash flow of a bank and the customer feedback. Later in the evening, he or she meets with the stall for a review and makes any necessary changes. Afterwards, he or she leaves for the day, but not before preparing the reports and plans for the next day. All in all, a bank manager has a busy day and requires practice, good decision making skills, and strong leadership क्वालिटीज़, क्वालिटिक्स लिखा हुआ है, ये क्वालिटीज़ ही है।
to carry out the day-to-day operations of the bank. अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप पेज नंबर 64 से 65 तक जो है वो पढ़ें केयरफुली, और उसके अंदर वो कह रहा है कि 200 वर्ड्स का जो है वो पैराग्राफ लिखें। सबसे पहले तो आप उसको पढ़ें, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। उसकी बेस पे आप एक नया पैराग्राफ लिखें, हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है, अपने अल्फाज के अंदर। अच्छा जी, द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग is a long and complex one. It dates back to the invention of paper in China in the 1st century AD. Initially, paper was used to record Chinese character, but by the 11th century, the Chinese had developed a method of printing using curved wooden blocks. In the 13th century, the first movable type printing press was developed in Korea and later in Europe. ठीक है, Johannes Gutenberg developed a mechanical printing press in mid 15th century. This revolutionized, ठीक है, revolutionized का मतलब होता है इनकलाब लाना, revolution से निकला है, revolutionized the printing process, making it easier, faster and more efficient. The invention of the printing press was a key component in the spread of knowledge and education. Prior to this, most books were hand copied and expensive, making them unaffordable to the masses. Now books could be printed quickly and cheaply, making them widely accessible. This encouraged the growth of literacy, and books were soon being used to spread religious and political ideas. ठीक है जी। The invention of printing press also had an impact on the arts. The printing of illustrations and artwork was much easier and cheaper than hand copying, and this led to a surge in the production of books and magazines that featured artwork. This in turn enabled the development of a new artistic styles and allowed the spread of artistic ideas and techniques across Europe. The invention of printing press was followed by the development of lithography in the 18th century and later in the 19th century by the development of the theory printing press. These advantages allowed for faster and more efficient printing and helped fuel the growth of media industry. By the late 19th century, the use of steam power had improved the production of printing presses, and this revolutionized the process of printing even further. The history of printing has seen a number of advances over the years for the development of movable type printing processes to the invention of the rotary printing press. These advances have made the printing process faster, cheaper and more efficient, and have helped to spread knowledge and artistic ideas throughout the world. This has had a profound impact on our society, and the invention of printing press is truly one of the most important inventions of all the time. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है यूनिट 3 जो है उसको केयरफुली पढ़ें और उसका जो 73 से 88 तक पेजेस हैं वो पढ़ें विच यू स्टडीड इन यूनिट 3। ठीक है जी, इसके बाद केयरफुली आप टाइप्स ऑफ बुक्स जो हैं उन पर एक इंट्रोडक्शन लिखें, उन पर ऐसे लिखें जिसका इंट्रोडक्शन हो, मेन बॉडी हो और उसके बाद कंक्लूजन हो। ठीक है जी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे टाइप्स ऑफ बुक्स के। Books are one of the oldest forms of entertainment and learning, from ancient manuscripts to modern literature. Books have been a part of human culture for thousands of years. As technology advances, more and more information is being made available in the digital forms. But
Books are still an important part of our lives. There are many different types of books, each with its own purpose and style, from fiction to non-fiction to children's books and academics texts. Books come in a variety of style and genres. In this essay, we will explore the different types of books and discuss their characteristics. ठीक है, इसके बाद ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी में उसका फंक्शन आ जाता है. Function is a type of literature that is not based on fact, but rather it is a story created by the author's imagination. Fiction can encompass many different genres, including romance, fantasy, science fiction, horror, mystery, and more. Fiction books often have characters, settings, and plots that are created by author rather than taken from real life. Fiction books can be written for both adults and children, and they are often meant to be entertaining and enjoyable to read. सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी या नॉन फिक्शन होती हैं. नॉन फिक्शन बुक्स आर दोज दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स rather than fiction. Non-fiction books can be about a wide range of topics, from history and science to business and self-help. Non-fiction books are often used as source of information as they provide factual information in a concise and organized manner. No fiction books can also be used to explore complex topics in depth, such as philosophy, politics, and economics. Children's books are designed to be read by children and are often used to teach them about the world. Children's books can be both fiction and non-fiction, and they often have colorful illustrations that help bring the text to life. Children's books often have simple language and storylines that are easy for young readers to understand. Popular children's books include picture books, chapter books, and early readers. इसके बाद है जी academic tests. Academic texts are texts are books that are written to provide information on a specific academic topic. Academic texts are often used in universities and colleges as source of information for students. Academic texts can be both fiction and non-fiction, and they often include detailed research and analysis of the topic. Academic texts are often used in texts are often written by experts in the field and are meant to be used as a reference for those studying the topic. इसके बाद एंड पे आपने कंक्लूजन लिख देना है. बुक्स कम इन मैनी डिफरेंट टाइप्स एंड जेनर्स. इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है. उसमें उसने कहा है कि एक्सरसाइज 9 जो है वो दी गई है पेज नंबर 96 पे, और उसमें कुछ क्लासिफिकेशंस जो हैं टीचर्स की क्लासिफिकेशंस या टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं उसमें. तो उनको देखकर उनको जहन में रख के आप लोग स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो करें. ठीक है, 5 स्टूडेंट्स की टाइप्स लिखें कौन कौन सी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पाई जाती हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी फाउंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़. These students can be categorized into different types based on their characteristics, attitudes, and behaviors. The first type of student is achiever. ठीक है जी.
पहला स्टूडेंट जो है वो अचीवर होना चाहिए। अचीवर्स आर टिपिकली हाईली मोटिवेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। दे स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस in their studies and are goal oriented. They are likely to be involved in many extracurricular activities such as clubs and sports and are often seen as model students। ठीक है जी। द सेकंड टाइप्स, इसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है ड्रीमर। Dreamers are usually very creative and imaginative but can be easily distracted. They may have difficulty concentrating on tasks and have difficulty staying on track. They are often seen as free spirited and can be prone to daydreaming. The third type of student is socializer. Socializers are outgoing and enjoy being around other people. They are often seen as the life of the party and are usually very popular among them peers. They may be involved in many different activities and may spend their free time socializing with friends। ठीक है जी। The fourth type of student is strugglers. Strugglers are usually very hardworking and determined. The may have difficulty succeeding at school. They may have difficulty फोकसिंग, ये जो वर्ड है ये फोकसिंग लिखा हुआ है, FOCUSING, फोकसिंग, एंड मे बी ईजली ओवरवेलम्ड। दे मे नीड एडिशनल सपोर्ट और असिस्टेंस इन ऑर्डर टू अचीव देयर एकेडमिक गोल्स। द फिफ्थ टाइप ऑफ स्टूडेंट इज़ लोनर। ठीक है जी। लोनर्स आर यूजुअली वेरी इंडिपेंडेंट एंड प्रेफर टू वर्क अलॉन। They may be more introverted and may not be comfortable in social situations. They may have difficulty forming relationships with other students and may prefer to work by themselves. The sixth type of student is the rebel। ठीक है जी। Rebels are often seen as troublemakers and may be seen as disruptive in class. They often challenge authority and may be seen as or rebellious. They may also be prone to risk taking behaviors and may be seen as rebellious. The seventh type of student is the procrastinator। Procrastinators are usually very high but may have difficulty completing tasks in a timely manner. They may be known for putting things off until the last minute and may have difficulty staying on tip of their studies. The eighth type of the student is perfectionists। Perfectionists are typically very detail oriented and strive for excellence and in everything they do. They may be highly organized and may have difficulty accepting anything less than perfect. They may be prone to perfectionism and may be very hard on themselves. Each of these types of students has their own unique strengths and weaknesses and can be very successful in their studies if they are able to identify and utilize these strengths. It is important for teachers and the educational system to provide support for each of these types of students and to recognize their individual needs। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 4 में से है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करें, आंसर दें। काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स वाले सेक्शन में से है और पेज नंबर जो है 107 से 111 तक है। ठीक है जी। इसकी दो पॉसिबल केसेस हैं, काजेज़ हैं
वो लिखें। हर जो सेंटेंस है जे तक, उनमें से हर के दो दो काजेज़ लिखें। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसको काज बोलते हैं। अच्छा जी, पहला सेंटेंस है द डॉक्टर्स वर ऑन द स्ट्राइक। डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं तो क्या हो सकता है, दे वर डिमांडिंग रेज इन सैलरी, कि वो सैलरी में रेज चाह रहे होंगे, या दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट CEO। तो ये इसके दो आंसर्स हैं। उसने कहा कि दो दो सेंटेंसेस जो हैं जो बन सकते हैं वो लिखें। इसके बाद है देयर इज़ अ वाटर पोल्यूशन इन द सिटी। तो इसका आंसर होगा मैनी पीपल फेल इल ड्यू टू डर्टी वाटर, वी हैव नो क्लीन वाटर टू ड्रिंक। ठीक हो गया जी। इसके बाद सी वाला पार्ट है हिज फादर डिड नॉट पिक हिम फ्रॉम स्कूल टुडे। अच्छा जी, उसके फादर ने उसको क्यों नहीं पिक किया। हिज फादर वाज बिजी इन अ मीटिंग, उसका बाप मीटिंग में बिजी था, या फिर हिज फादर्स कार वाज आउट ऑफ ऑर्डर, या उसकी कार जो है वो ख़राब हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दे आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स एनी मोर। ठीक है जी, डी वाला क्वेश्चन। तो दे हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग और दे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद ये है ही वाज इम्प्राइजन्ड फॉर मैनी ईयर्स। तो ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वाज कॉट इन स्मगलिंग। ठीक हो गया। ई है, इसके बाद एफ है ही ओपन द डोर लेटर फॉर देम। अच्छा जी, ही वाज इन वाशरूम या ही वाज बिजी इन अ कॉल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है आसिया केम होम अर्ली फ्रॉम वर्क। तो जी के आंसर हो सकते हैं शी वाज नॉट फीलिंग वेल, या शी हैज़ टू अटेंड हर फादर्स वेडिंग। तो कोई भी आप लिख सकते हैं सॉलिड रीज़न। अच्छा जी, एच है हमारे पास द लैपटॉप्स बैटरी वाज डेड। तो एच का आंसर होगा द लैपटॉप डिड नॉट स्विच ऑन, और दूसरा है जी आई कुड नॉट कंप्लीट माई असाइनमेंट। ठीक हो गया जी, ये एच वाला हो गया। इसके बाद है हमारे पास आई वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, आई हमारे पास ही गॉट लेट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो आई के आंसर होंगे अच्छा जी, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, शी हैज़ टू अटेंड हर फ्रेंड्स वेडिंग। ठीक है जी, ये आई वाला हो गया। सॉरी, ये एच वाला है। इसके बाद जे वाला है द ATM वाज आउट ऑफ सर्विस। ठीक है जी, ATM आउट ऑफ सर्विस क्यों था। तो इसका आंसर है आई कैन नॉट गेट कैश फ्रॉम ATM, या फिर आई हैव टू रिटर्न होम होपलेसली। तो यहाँ तक हमारी असाइनमेंट जो है वो एंड हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहीं तक इस लेक्चर को एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड या इस असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अपने कोर्सेज से मुतल्लिक, अपने पेपर पैटर्न के मुतल्लिक अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें। मैं लिंक भी दे दूँगा वीडियो के साथ। तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लें, और इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।